Good morning, beta. How are you all? I hope all are fine and safe at home. Okay, we are done with part 1 and part 2 of exercise sheet number 3 that are of noun. Okay, हमने noun वाला part 1 और part 2 देख लिया. Now we are moving towards question number 6. Change the gender of the following words. Now what is gender, beta? Gender का मतलब मैम ने समझाया था ना, जाति होता है. Yes, so here what you have to do, you have to change the gender of the following. You know that now 3 types of genders are there. Masculine, that are the male gender, feminine, that are the female gender, and neuter, that is all living thing gender. ठीक है, whatever living things are there, they are in neuter gender. Whatever gents are there, or we can say that the males are there, man, grandfather, uncle, so these are the men only, है ना, so they are masculine gender. And all the ladies, that is mother, grandmother, woman, okay, so these ladies, girls, are in the feminine gender. And all the non-living things like computer, phone, compass box, your pencil, eraser, these are the non-living things, so they are in neuter gender. But here in this exercise, what we have to do, beta, we have to change the gender. Okay, now you can see the question number 1. We have done this question in that Zoom lecture also. Okay, so what is the gender change of sir? Sir is in masculine gender. Sir किस में आएगा बेटा? Masculine gender में. So what is the feminine of sir? Madam. Very good. So we are going to write madam here. M-A-D-A-M, madam. Okay, here madam I have written. Okay, so madam is the masculine change, feminine gender, and it's a gender change of sir. Here also simply you have to write the opposite, beta. इसका opposite लिख लोगे ना तो you'll get to know okay what is the gender change. Now ऐसे ही करते, aunt का opposite कैसे हुआ? Aunt is a feminine gender. So what is the masculine gender of aunt? It's an uncle. Very good. U-N-C-L-E, uncle. Okay, now here niece, ये भी मैंने समझाया था व्हाट इज नीस. हाँ, मैंने पूछा था और बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था. हाँ, सो व्हाट इज नीस बेटा? नीस क्या होती है? नीस का मतलब होता है भतीजी. ओके, लाइक योर फादर और योर मदर की, आपके पापा की या आपके मम्मा की जो बहन या भाई के लड़की होगी ना, सो दैट इज़ द नीस टू योर फादर और द नीस टू योर मदर. ठीक है, आपके जो पापा के भाई की जो बेटी होगी ना, दैट इज़ नीस टू योर फादर, और वो आपका कज़िन होगा, वो आपकी कज़िन होगी. ओके, नाउ नीस इज़ भतीजी, सो उसका जेंडर चेंज क्या हुआ बेटा? नेफ्यू. वेरी गुड. N-E-P-H-E-W, nephew. Nephew means bhatija. Okay, now bhatija is the बॉय, लाइक सन टू योर, आपके पापा के भाई का जो लड़का होगा या आपके मम्मा के भाई या बहन का जो लड़का होगा, दैट इज़ द नेफ्यू टू योर ब्रदर और टू योर फादर और द मदर. नाउ व्हाट इज़ द जेंडर चेंज ऑफ ब्रदर? और सिंपली यू कैन सी दैट व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ ब्रदर? सिस्टर. S-I-S-T-E-R, sister. Okay, here also first letter should be capital. Then what is the gender change of lion? Lion is an masculine gender. Yes. What is the feminine of lion? Lion का feminine क्या होता है? Lioness. Yes. So L-I-O-N-E-S-S, lioness. Okay. Now what is the gender of horse? Horse का क्या होगा बेटा? हॉर्स का मेल होता है. M-A-R-E, मेल. ओके, M-A-R-E, मेल. ठीक है, घोड़ा तो घोड़ी, ऐसे. Now let us move to the question number 7. Change the gender of the underlined nouns and rewrite the sentences. Here also you have to change the gender. Now my sister goes to school. So what has been underlined for you? Sister. So you have to change the sister gender. Okay, what is the gender change of sister? Brother. Okay, sister is a feminine gender और brother उसका क्या हुआ? Masculine. So my brother goes to school. This way you have to rewrite the sentence. Okay, I'm going to write also M capital. My brother goes to school. Okay, now full stop will be there at the end. Now let us move to the question number 2. My uncle sings well. Here also अभी हमने देखा what is the gender change of uncle? Aunt. Okay, so here we are going to write as my aunt sings well. मेरी आंटी बहुत अच्छा गाना गाती है, तो my aunt, A-U-N-T, aunt sing well.
Okay, and full stop will be there at the end. Now, I saw a tiger at the zoo. Now, what is the gender of what is the gender change of tiger? Tigress. ठीक है? तो I saw a tigress at the zoo. Now, I am going to write it also. I capital I saw a tigress. Okay, what is the spelling of Tigreess? Tigreess, tigress. Okay, tigress at the zoo, and the full stop will be there at the end. The boy played in the park. Question number 4 is the boy played in the park. So what is the gender change of boy? Girl. Very good. So the girl played in the park. T should be capital. The girl played in the park, and full stop will be there at the end. Okay, chalo, question number 5. The princess smiled. Now what is the gender change of princess? Princess का मतलब होता है राजकुमारी, तो राजकुमारी का क्या होगा बेटा? राजकुमार. Very good. So the prince smiled. That way we have to change T capital. The prince smile. Okay, and the full stop will be there at the end. So this way you have to rewrite the sentence by changing the gender of the underlined noun. Okay, let us move to question number 8. Write M for the masculine, F for the feminine, and N for the neuter gender. So here we have to classify the nouns in like gender wise. Okay, हमको gender wise nouns को classify करना है. जो भी उसका होगा, like king. King क्या होता है बेटा? मस्क्यूलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर. यस, किंग इज अ मैन ना. किंग तो मैन हुआ ना, आदमी हुआ. यस, तो हम उसके लिए मस्क्यूलाइन में लिखेंगे, लेकिन मस्क्यूलाइन के लिए क्या लिखना पड़ेगा? एम. तो आई एम गोइंग टू राइट ओनली एम हियर. ओके, सिर्फ आपको कैपिटल में एम लिखना है. दिस वे. नाउ टेबल. टेबल इज अ नॉन लिविंग थिंग. टेबल नॉन लिविंग थिंग होता है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे बेटा? न्यूटर जेंडर. सो एन विल बी देयर. ओके, देन लायन. लायन इज अ मेल, तो एम विल बी देयर. ओके, कार. कार इज अ नॉन लिविंग थिंग. कार भी नॉन लिविंग में हुआ ना बेटा. सो हियर वी आर गोइंग टू राइट एन ओनली. ओके, मेर. अभी मैंने बोला था व्हाट इज द जेंडर चेंज ऑफ हॉर्स? हॉर्स इज अ masculine gender, so mare is here, he is female gender. So mare is a mare, M-A-R-E, mare is a feminine gender. घोड़ी होती है, मेर का मतलब होता है घोड़ी, and घोड़ी means फीमेल. ओके, नाउ एम्पेरर. एम्पेरर मीन्स अ किंग. किंग का जो सिमिलर होता है ना बेटा, वो एम्पेरर होता है. एम्पेरर का मतलब भी राजा होता है, एंड एम्प्रेस होगा तो इट इज़ अ क्वीन ओनली. तो एम्पेरर इज अ मस्क्यूलाइन जेंडर, सो वी आर गोइंग टू राइट एम देयर. नेफ्यू. नेफ्यू का मतलब क्या होता है? आई हैव टोल्ड यू. नेफ्यू मीन्स भतीजा. हाँ, सो इट्स अ बॉय. तो बॉय मीन्स मैस्कुलाइन जेंडर, तो वी विल राइट एम देयर. ओके, नाउ ड्यूक. ड्यूक मीन्स, ड्यूक इज अ मेल पर्सन. जो ड्यूक होता है ना बेटा, ड्यूक का जेंडर चेंज होता है डचेस. ओके, तो हियर ड्यूक इज अ मेल पर्सन, सो आई एम गोइंग टू राइट एम देयर बिकॉज इट्स अ मैस्कुलाइन जेंडर. नाउ ब्राइड. यू हैव सीन ब्राइड इन द मैरिजेस. हाँ, ब्राइड देखिए ना, ब्राइड देखा है ना आपने? ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम है ना. यस, यस, जिस लड़की की शादी हो रही होती है, पता है ना, दैट इज़ अ ब्राइड ओनली. सो ब्राइड इज़ अ फीमेल, है ना. सो वी आर गोइंग टू राइट फेमिनाइन जेंडर, एफ हियर ओनली. एंड ब्राइड ग्रूम का मतलब दूल्हा, दैट इज़ द बॉय हु इज़ गेटिंग मैरिड, है ना. तो दैट इज़ वाई ब्राइड ग्रूम इज़ अ मेल पर्सन, सो वी आर गोइंग टू राइट एम देयर. ओके, so that is we have to write like what is masculine, what is feminine, and what is neuter gender. Okay beta. Okay, so now we are moving towards our last question. Read the question first. Match the pictures correctly to form compound nouns. Then write the words formed in the given bracket. So here, what you have to do, beta? I have taught you what are compound nouns. Compound nouns are nothing but they'll formed by joining two different nouns. ठीक है? जब हम two different nouns को join करते हैं, तो क्या बनता है? Compound noun. Yes. So here also I have given the pictures. Okay, this is a puzzle type to you, है ना. Like here, cup is there. It is a ball. It's foot. Then it's a bee, star, cake, like butter,
like this is a flower, sun and fish. Okay, so this way what you have to do, you have to match the pictures. Like cup is there, so cup ball is possible, no. Cup B is possible, no. Cupcake is possible, yes. Cupcake is there, cupcake आपको पसंद है ना, yes. It's kind of a pastry only, एक तरह का पेस्ट्री है, एक तरह का केक होता है cupcake, है ना. तो yes, तो this way we what we have to do, we have to match them. Okay, like this way we have to, like मैंने यहाँ पे मैच कर दिया cup and cake को. ठीक है, फिर we are going to write the whole spelling here. Now what is the whole spelling? C should be capital here. Okay, so C-U-P, cup, C-A-K-E, cake, cupcake. So this way we have to form the word. So it's a compound noun. ये compound noun हुआ ना बेटा. It has been made by two different nouns. Cup is also a noun, cake is also a noun. तो पूरा एक बन गया compound noun. Now चलो foot. अब तो बहुत easily बोल दोगे. foot का क्या हो जाएगा बेटा? ball, football, है ना. Yes, so here we are going to football, right? F should be capital F double O T, foot, B-A-double-L, ball, football. Okay, now star. चलो ये तो हो गया. Star B will can be possible? No. Star flower? No. Starfish? हाँ, starfish है ना, aquatic animal, एक तरह का aquatic animal होता है starfish. Okay, तो we are going to join it. And S here should be capital star fish. ओके चलो, इट इज़ बटर. बटर का है ना ये, हाँ बटर वाला है आपको. चलो अभी मुझे बताओ क्या होगा उसमें. बटर और दिस इज अ फ्लाई, नॉट बी. हाँ सॉरी बेटा, आई हैव मिस्टेकनली से बी ओनली, इट इज़ अ फ्लाई ओनली. तो बटर fly. Yes, so we are going to join them and we are going to write it here also. Okay, so butter, B should be capital beta, B-U-T-T-E-R, butter, and F-L-Y, fly, butter, fly. And now what is remaining? Only question number 5, sunflower. Yes, so we are going to join it also and we are going to write it, sunflower. है ना. दिस इज इट. हाउ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज इट वॉज, नहीं? yes, it's a kind of puzzle to you. Now okay, so we are done with 9 questions. Okay, 9 questions are there in our exercise sheet number 3 of English 1, that is nouns. Okay, chalo, the whole exercise sheet you have to write in the notebook. I know that you'll take time for writing, don't worry beta, just take your time, but please once you have to write the whole exercise sheet in the notebook. Okay, chalo, if you are having the doubt you can let me know in the next Zoom class. Till then, bye bye beta, your ma'am is signing off.